Now compounds, we studied about molecules, here also compounds, ionic compounds. अब हम बात किसकी कर रहे हैं? आयोनिक कंपाउंड्स की. आयंस आपस में जुड़ के कंपाउंड बनाएंगे एंड दैट विल बी कॉल्ड एज अ आयोनिक कंपाउंड. आपस में जुड़ेंगे क्यों आयंस? क्योंकि अभी हमने देखा आयंस के पास चार्जेस हैं, पॉजिटिव है किसी के पास नेगेटिव भी आता है. एंड वी नो दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर. दीज आर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. ओके, ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के कारण जो फोर्स डेवलप होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ये आपस में अट्रैक्ट होंगे एंड दे विल बाउंड अप, दे विल बाइंड टुगेदर एंड फॉर्म अ मॉलिक्यूल. पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स, और यू कैन से पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आयंस, दे कंबाइन, bind up and form a compound, and we call that compound as a ionic compounds. So the compounds which are made up of ions, same definition, the compounds which are made up of ions are called ionic compounds. Okay, in an ionic compound a positively charged ion binds with the negatively charged ions. दो positive bind नहीं होंगे कभी भी, दो negative bind नहीं होंगे कभी भी, always one positive and one negative. They held together by strong इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. कौन सा फोर्स है जो दोनों को बाइंड करके रखता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ओके, द फोर्स बिटवीन द चार्जेस. व्हेनेवर वी सी ए कंपाउंड मेड अप ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, कोई भी कंपाउंड बना हुआ एक मेटल का है और एक नॉन मेटल है उसमें, तो डेफिनेटली इट इज ए आयोनिक कंपाउंड. ओके, एग्जांपल्स आर कैल्शियम क्लोराइड, इसमें मेटल है कैल्शियम, नॉन मेटल है हमारा क्लोराइड. Calcium and chloride ion, one is positive, one is negative. You have potassium sulfate, the potassium ion and the sulfate ion. You have potassium nitrate, the potassium ion and the nitrate ion. You have calcium carbonate, calcium ion and the carbonate ion. Okay, so you can see them. All ionic compounds, they consist of one positive ion, one negative ion, one cation, one anion, and they bind up together, positive and negative. So these type of compounds are called as ionic compounds. Is it clear? Further, you can see so many examples over here of ionic compounds. We have sodium chloride, potassium chloride, ammonium chloride, magnesium chloride. All chlorides are there, oxides are there, hydroxides are there, sulfate, nitrate. These are all non-metals on the right hand side. Left hand side, metals. एक हमारे पास non-metallic है, ammonium chloride. आपको पहले भी हमने बताया था, अमोनियम इज अ नॉन मेटेलिक कटायन. सो कटायन एनायन यहाँ पे भी है, अमोनियम क्लोराइड. ओके, सो दीज आर द कंपाउंड्स वी आर हैविंग ओवर हियर. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड एंड दिस आर द कटायंस और अनायंस व्हाट दे कंटेन. ओके, इट्स क्लियर. अब तो ये फॉर्मूला देख के आप बता सकते हो, मैग्नीशियम है यहाँ पे, सपोज मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम मेटल है, ऑक्सीजन मेरा नॉन मेटल है, सो मैग्नीशियम इज अ कटायन एंड ऑक्सीजन इज द अनायन. अब चार्ज कितना होगा हमने अभी कहा था, आपको याद करना पड़ेगा. मैग्नीशियम 2+, ऑक्सीजन 2-. ओके, सो यू कैन सी दिस लिस्ट ऑफ सम ionic compounds. These all are ionic compounds. Okay, moving further, coming back, moving further नहीं, पहले coming back. ये जो बीच में हमने लिखा है, what is this? The chemical formula. Okay, ये नाम है, हर जगह नाम लिखने में लंबा हो जाता है. If you are writing a chemical reaction, तो हर एलिमेंट का, हर कंपाउंड का अगर हम नाम लिखना स्टार्ट करें तो टेक्स टाइम, स्पेस, एवरीथिंग. सो व्हाट डू वी यूज द नेम्स, शॉर्टकट, शॉर्ट फॉर्म में उनके नाम को हम यूज करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज अ केमिकल फॉर्मूला. तो हर कंपाउंड के लिए या एलिमेंट के लिए हमें केमिकल फॉर्मूला यूज करते हैं इन विच दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द, याद है हमने बताया था हर एलिमेंट का अपना एक फर्स्ट लेटर वर्ड या फर्स्ट एंड सेकंड लेटर या ग्रीक लेटर पे उनका नामकरण किया हुआ है सबका. तो दैट अल्फाबेट्स वी यूज ओवर देयर to represent those elements. Okay, and so that is called as a chemical formula. So this is a chemical formula topic now. किसको कहते हैं हम chemical formula? What it is? Chemical formula can be of a compound or an element. किसी का भी हम represent कर रहे हैं, नाम को represent कर रहे हैं यहाँ पे, तो it represents, जो भी formula हम लिखते हैं उसमें होता क्या है, उस formula में हर एक element का symbol होता है, उस compound में कौन कौन से atom है, किस किस एलिमेंट के एटम्स है, सबका नाम होता है उसके अंदर और कितने हैं. सो केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड ऑफ एन केमिकल फॉर्मूला ऑफ एन कंपाउंड और एन एलिमेंट, कुछ भी हो, कंपाउंड हो या एलिमेंट हो, इट रिप्रेजेंट्स द कंपोजिशन ऑफ द मॉलिक्यूल. उस कंपाउंड का या एलिमेंट का जो मॉलिक्यूल है उसको रिप्रेजेंट करता है एंड
इट शोज द नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स, हर एक एटम को रिप्रेजेंट करेगा कितने एटम उस मॉलिक्यूल के अंदर है. सो ओवरऑल इफ यू वांट टू डिफाइन इट, you can define this that a chemical formula of a compound or element represents the composition of the molecule of the compound or element in terms of the symbols of the element, in terms of symbols of the elements in it, and the formula of the compound or element tells the kinds of atom, कौन-कौन से atom है और कितने हैं, the kinds of atom and the number of atoms, कौन सा एटम उसमें है और कितना एटम है, दोनों चीज बताता है आपको. ओके उसके अंदर है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी ओवर हियर द फर्स्ट कंपाउंड ओवर हियर इज एल्यूमिनियम सल्फेट. व्हाट इज दिस? एल्यूमिनियम सल्फेट. इफ यू सी दिस फॉर्मूला इट्स टेलिंग यू दैट इसके अंदर क्या क्या है. एल्यूमिनियम है Al, सल्फर है S, ऑक्सीजन है O, तीन चीज है इसमें, और से S और O मिला के यहाँ पे बना हुआ है सल्फेट. क्लियर? सो इट हैज एल्यूमिनियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन. कौन कितना है इसमें? If you check out aluminium, it is 2 atoms of aluminium. 2 atoms. If you talk about sulfate, हम सल्फेट की बात करते हैं, पूरा SO4, सल्फेट का फॉर्मूला हमारा पूरा SO4. तो SO4 कितने हैं? 3. The 3 molecules of SO4. So अगर इंडिविजुअली अगर हम चेक करें तो this 3 stands for sulfur also and oxygen also. तो there are over 3 atoms of sulfur. सल्फर के कितने एटम है? 3. So there are 3 atoms of sulfur and how many atoms of oxygen are here? Let me make it correct it out. Here there are total 12. O4. O4 3 बार है, तो total oxygen कितने हो गए? 12. So 12 atoms of oxygen. Is it clear? So over here what do we get? This aluminum sulfate contains 2 atoms of aluminium, 3 atoms of sulfur and 12 atoms of oxygen. So एक फॉर्मूला आपको पूरा इंफॉर्मेशन देता है उस कंपाउंड के बारे में, a single molecule of that compound, what it contains and how much it contains. Another example, magnesium chloride. So you can see this magnesium chloride, 1 atom of magnesium and 2 atoms of chlorine are here. So you get the information. So a chemical formula represents the molecule and the property of that chemical. इस molecule का भी property वही होगा जो उस chemical का है. It is a representative of that chemical. Okay, a chemical formula is a representative of that chemical, I can say. It's clear now what is a chemical formula. Further, if we move some more information about chemical formulas, ionic compounds. So ionic compounds are formed by combination of metals and non-metals. So how do we write the name of an ionic compound, or how do we use the chemical formula for a ionic compound? अब chemical formula को हम लिखते कैसे? Symbols में तो आ गया, उसका नाम कैसे लिखेंगे? How do we write its name? There are some rules to write the names. Okay, so whenever you are writing the chemical formula or you are naming the chemical of an ionic compound, okay, so ionic compound is made up of metal and non-metal. तो सबसे पहले हम metal का नाम लिखते हैं, पहले metal का नाम लिखेंगे, बाद में non-metal का नाम लिखेंगे. हमेशा metal का नाम as it is आएगा, but the non-metal name you have to change it to ide. Oxygen changes to oxide, chlorine to chloride, so IDE last में लगेगा, suffix. You can see over here, the metal element is written on the left hand side as it is and the non-metal is written on the right hand side. The metal name is as it is, whereas the non-metal name is converted to I ending with IDE, ide, like oxide, chloride, sulfide, etc. Okay, you can see an example, MgO, it is magnesium and oxygen. So this compound will be named as magnesium oxide, not oxygen. I will say oxide, magnesium oxide, not magnesium oxygen. Okay, so name here is magnesium oxide. Here it is sodium, metal is sodium as it is named. Then it is chlorine, so the name becomes magnesium chloride, and here it is copper sulfide. It's clear? So whenever you want to name a chemical formula of an ionic compound which contains a metal and a non-metal, so what is to be done? Metal first name and then the non-metallic part. While writing also, we write the metal part first and then the non-metallic part. Okay, so these are some rules for chemical formula. कोई भी chemical formula के लिए, बनाने के लिए, लिखने के लिए, नाम करने के लिए एक rules है हमारे. Okay, and if you have a molecular compound, like if it is a compound by combination of 2 different non-metals, वहाँ पर क्या था, एक metal और metal, अब क्या हमारे पास एक दोनों ही non-metal मान लेते हैं, both are non-metal.
So then what do we do? The नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, कितने अच्छे से गेन करते हैं उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हर नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, कोई ज्यादा करता है अट्रैक्ट, कोई कम करता है। जो ज्यादा अट्रैक्ट करता है दैट इज कॉल्ड एज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। गॉट इट? व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट? द वन विच अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन मोर एज कंपेयर टू अदर्स, तो दैट इज कॉल्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो व्हेनेवर यू आर राइटिंग द नेम ऑफ टू नॉन मेटल्स, कंपाउंड बना हुआ है हमारा, किसका बना हुआ है? दो नॉन मेटल का, two non-metals, then while writing the formula, the less electronegative non-metal element is written on the left hand. जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका नाम पहले आएगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका नाम बाद में आएगा। ओके, लिखने में भी फर्स्ट यू टू राइट द symbol of the element which is less electronegative, and then you write the more electronegative one. For example, over here it is HCl, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो पहले नाम किसका लिखेंगे हम यहाँ पे? हाइड्रोजन का। सो दिस विल बी कॉल्ड एज इट विल कॉल्ड एज हाइड्रोजन क्लोराइड। सेम थिंग, पहला नाम एज इट इज, बट पीछे जो लगेगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल, उसका नाम IDE से एंड होगा। क्लोरीन था, क्लोराइड हो जाएगा। ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड हो जाएगा, सल्फर है तो सल्फाइड हो जाएगा। अगेन यू कैन सी हियर इट इज हाइड्रोजन एंड सल्फर, सो द नेम विल बिकम हाइड्रोजन सल्फाइड। इट्स क्लियर? सो इट इज हाइड्रोजन सल्फाइड ओवर हियर। सो क्लियर? कभी भी नाम लिखना है, दो नॉन मेटलिक कंपाउंड है, दिस कंपाउंड कंटेन्स टू नॉन मेटल्स, so the more electronegative is written on the right hand side and the less electronegative is written on the left hand side. Left hand पहले उसको लिखेंगे, less electronegative, then the more electronegative. And how do you name it? The less electronegative का नाम as it is रहेगा, but more electronegative के नाम को IDE से end करेंगे हम, IDE. So that is it. Okay? So this is how some rules made by IUPAC. हमने पहले भी डिस्कस किया था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। वहां से होता है सब रूल्स एंड रेगुलेशन, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन। सो दैट वाज द नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स। ओके, कुछ और चीजें ध्यान रखना पड़ता है हमको नामकरण करते समय, जब भी इनका नाम लिखते हैं। देयर आर सम रूल्स अगेन समथिंग, समटाइम्स दिस कंपाउंड, जैसे कार्बन है ऑक्सीजन है, दोनों चीज है, बट कभी कभी क्या होता है जो एटम है एक से ज्यादा यूज हो रहे हैं, तो क्या होता है यहाँ पे, when there are more than one atoms of an element in a molecular compound, more than one atom of a kind, then we indicate the name. In the name it is indicated that there are more than one or more than two atoms over there. For example, this is carbon and oxygen. So here you can see it is written carbon, it is written as carbon monoxide. But if it is two oxygen over here, then it is called as carbon dioxide. Both are oxides of carbon, but one is monoxide, one is dioxide. Here you can say it is called as carbon tetrachloride. Carbon tetrachloride, चार क्लोरीन इसमें लगे हुए हैं, तो टेट्रा। सो यहाँ पे नाम के आगे लगा होता है, सो हम प्रीफिक्स कर देते हैं। हाउ मेनी एटम्स आर देयर? 1 2 3, 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा। It is your phosphorus pentachloride, you can see over here. Okay, so while naming the compounds, we use this also to indicate how many atoms are there in the molecule. Okay, so these are some of the rules while writing a name. The more you will write on, जैसे हम लिखते जाएंगे नाम को, ये आपको used to होते जाओगे इन चीजों के लिए, and you'll come to know these things.